Hello students, welcome back to my YouTube channel Chemical Funda. In today's video, we are going to see law of constant proportion. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में दो लॉ है, उसमें से पहला जो लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो की लिंक आपको दे देती हूँ, यू कैन सी इट आफ्टरवर्ड्स। In 1794, the French scientist J.L. Proust stated the law of constant proportion. The proportion by mass of the constituent elements in the different samples of a compound is fixed. Constituent elements जो है different samples के of the same compound will be fixed. We will see some examples to understand this law of constant proportion. पहले हम देखेंगे water molecule. See, molecular mass of hydrogen is 1 and oxygen is 16. In H2O, we are having 2 hydrogen atoms. So mass of 2 hydrogens will be 2 and mass of oxygen is 16. एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम होता है. So we will get ratio for the constituent elements hydrogen and oxygen as 2h to 16. If you will simplify this ratio, you will get answer 1:8. So this ratio 1:8 is fixed for water molecule as its constituents atoms hydrogen and oxygen, they are in a ratio 1:8. The proportion by mass of hydrogen and oxygen in water is obtained from any source is 1:8. आप कोई भी सोर्स ले लो, उसमें से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम जो है वाटर में से उनका प्रोपोर्शन बाय मास हमेशा 1:8 इतना ही होगा. इफ़ यू विल टेक ओशियन वाटर, टैप वाटर और रिवर बेड वाटर, डजेंट मैटर, द रेशियो फॉर द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन will remain same as 1:8. See one more example for the carbon dioxide. Proportion by mass of carbon and oxygen in carbon dioxide obtained from any source is 3:8. Molecular mass of carbon is 12 gram and molecular mass of one oxygen is 16 gram. So we can write 12:32 because we are having here oxygen molecules. दो ऑक्सीजन के एटम हैं. So 12:32, if you will simplify, you will get 6:16. If you will divide 12 and 32 by 2, you will get 6:16. Again you will divide it by 2, you will get 3:8. Now this 3:8 you cannot simplified into simple ratio. So this proportion between carbon and oxygen remains same as 3:8. Proportion by mass of carbon and oxygen in carbon dioxide obtained from any source is 3:8. आप कोई भी सोर्स से फॉर्म होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, इसमें से कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशो है वो हमेशा 3:8 इतना ही फिक्स होगा. टू वेरीफाई दिस लॉ वी विल सी वन एग्जाम्पल. Two samples
ऑफ द कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड हमने लिए हैं फ्रॉम टू सोर्सेस. वन इज बाय decomposition of copper carbonate and another by decomposition of copper nitrate. कॉपर कार्बोनेट और कॉपर नाइट्रेट, इन दोनों से हमने डिकम्पोजिशन किया, सो वी विल गेट कॉपर ऑक्साइड, एंड दैट कॉपर ऑक्साइड वी हैव टेकन फॉर द वेरिफिकेशन. From each of these sample, a mass of 8 ग्राम of copper oxide. ये जो दोनों सैंपल है इनमें से हमने 8 ग्राम कॉपर ऑक्साइड लिया, and that treated independently with hydrogen gas, and it is observed that both gave 6.4 gram copper metal and 1.8 gram water molecule. Copper oxide and hydrogen gas, when treated together, they gives copper and water. Now see, the reaction of copper oxide and hydrogen yielded two substances, namely water and element copper. हमने अभी देखा कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इनमें से हमने रिएक्शन किया, यू विल गेट टू कंपाउंड्स कॉपर एंड वाटर. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अ कंपाउंड वाटर, हाइड्रोजन and oxygen are in a proportion 1:8 by mass. It means that 9 gram of water, there are 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen. वाटर में उनका रेशो कितना था? 1:8. अगर हमने 9 ग्राम वाटर लिया, 9 ग्राम, तो उसमें से 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा. हमने दोनों को मिलाया तो वी विल गेट 9 ग्राम ऑफ वाटर मोलिक्यूल, क्योंकि उसका रेशो फिक्स है. ओके, सो इन 1.8 ग्राम वाटर, हमें जो ये 1.8 ग्राम वाटर मिला है, इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, उसमें कितना ऑक्सीजन होगा? सो दिस 1.8 ग्राम वाटर कंटेन 8 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाय 9. 9 ग्राम में 8 ग्राम 9 ग्राम वाटर H2O में 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 1.8 सी इन 9 gram of water there is 8 gram of oxygen. Therefore, in 1.8 gram of water there will be, what will be the quantity of oxygens? To calculate this, we will do cross multiplication and we will get 8 into 1.8 divided by 9 is equal to 1.6 gram of oxygen. So you will get 1.6 gram of oxygen, and this oxygen has come from 8 gram of copper oxide. ये जो 1.6 ग्राम ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिला हमें? कॉपर ऑक्साइड से मिला, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड को हमने जब ट्रीट किया हाइड्रोजन गैस के साथ, हमें मिला था कॉपर और H2O, और ये जो H2O है इसी में वो ऑक्सीजन होगा, क्योंकि कॉपर के साथ तो ऑक्सीजन है ही नहीं यहाँ पे. So 8 gram of copper oxide contains, so we can write, हमारे पास 8 ग्राम कॉपर ऑक्साइड है. इन 8 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड हमें ऑक्सीजन कितना मिला? 1.6 ग्राम ऑक्सीजन. तो कॉपर कितना होगा उसमें? बची हुई क्वांटिटी 8 माइनस 1.6, सो वी विल गेट 6.4. सो 8 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में 1.6 ग्राम ऑक्सीजन होगा एंड 6.4 ग्राम कॉपर होगा. सो इन 8 ग्राम
of copper oxide contain 6.4 gram copper and 1.6 gram oxygen. Therefore, proportion by mass of copper and oxygen in it is, तो कॉपर ऑक्साइड में अगर हम प्रोपोर्शन देखें कॉपर और ऑक्सीजन का, सो वी कैन राइट 6.4 एज टू 1.6. If you will simplify this, we will get 4 is to 1. If you will divide both number by 1.6 and here 1.6, you will get answer 4 is to 1. It means that proportion by mass of the constituent elements in different samples of a compound is constant. If we will see proportion by weight of the constituent elements of copper oxide obtained from its molecular formula, copper oxide, कॉपर का मोलिकुलर मास कितना है 63.5 एंड ऑक्सीजन का कितना था, ऑक्सीजन का 16. If you will simplify this ratio, you will get answer as 3.968 is to 1. It is approximately 4 is to 1. So we have taken here copper oxide from copper carbonate by the decomposition of copper carbonate and from the decomposition of copper nitrate. सो ये दोनों सोर्स से हमने कॉपर ऑक्साइड लिया और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है कार्बन एंड ऑक्सीजन उसका रेशो लिया, वी गेट आंसर 4:1. और हमने सिंपली उसका मोलिकुलर फार्मूला लिया कॉपर ऑक्साइड का और उसका रेशो दिया कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का, देन ऑल्सो वी गेट द सेम आंसर. So the experimental values of the proportion by weight of the constituent elements matched with the expected proportion calculated from the molecular formula. Thus, law of constant proportion is verified. इसकी तरह से हमने ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है उसको वेरीफाई किया है. आई होप you have understood the concept of the law of constant proportion. If you are having any doubts, you can ask me in a comment box. So तब तक स्टडी करते रहिए, कुछ भी डाउट हो so you are free to ask in a comment box. So thanks for watching. Thank you.